Hello everyone, this is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss entry coating process and material used in entry coating of tablet. An entry coating is also known as gastro-resistant coating is a barrier applied to oral medication that control the location in the digestive tract where it is absorbed. The term enteric refers to the small intestine. Therefore, enteric coating resists breakdown of medication before it reaches to the small intestine. This is the diagram of enteric coating tablet. एंट्री कोटिंग आपके पास है क्या चीज? एंट्री कोटिंग आपके पास है गैस्ट्रोरिस्टेंट, मतलब आपके जो जीआईटी ट्रैक में जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वहां से रिसिस्ट करेगा, वहां से आगे अप्लाई, ठीक है, मतलब वहां से आगे जाएगा, कहां जाएगा, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, एंट्री कोटिंग ड्रग डू नॉट डिसॉल्व इन द एसिडिक कंडीशन ऑफ द स्टमक। तो जीआईटी में जो आपके पास क्या है, जो स्टमक है, ठीक है, जो एसिडिक मीडियम है, वहां पे आपके पास ड्रग क्या रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास ड्रग कहाँ पे रहेगा, आपके पास ये डिसॉल्व होगा आपके पास एल्केलाइन मीडियम, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आपके पास जो एंटेरिक वर्ड रेफर करते हैं, ठीक है, वो किस लिए आपके पास है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। एंटेरिक कोटिंग आर यूजुअली फॉर्मुलेटेड विद सिंथेटिक पॉलीमर्स, material often referred to as a polyacid. These polymers contain ionizable functional group that render them water soluble at the specific pH value. Now the reason for application of enteric coating. Enteric coating are applied to dosage form for the following reason. First reason आपके पास है to protect the acid liable drug substance from the acidic pH of the gastric acid, such as substance including erythromycin, pancreatine, omeprazole. To prevent the gastric distress, ulceration, nausea due to irritation caused by certain drugs such as aspirin and certain non-steroidal anti-inflammatory compounds. To deliver drugs that are optimal absorbed in a small intestine to their primary absorption site in their most concentrated form. To provide a delayed release component to repeat action tablet. देखिए, जरूरत क्या आपके पास है एंट्री कोटिंग कि फर्स्ट तो आपके पास क्या है, हमने क्या करना है, अपनी ड्रग को एसिडिक पीएच से बचाना है, ठीक है। तो अगला आपके पास है, आपके पास कोई भी ड्रग आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एसिडिक डिस्ट्रेस हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है और नॉजिया भी आपके पास कॉज होता है, ठीक है। इरिटेशन कॉज होते हैं कुछ ड्रग के कारण, जैसे एस्प्रिन हो गया और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स हो गए हैं, ठीक है। और आपके पास अगला रहता है, आपके पास क्या है, टारगेट है, आपने वो जो ड्रग आपके पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपके पास डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, और टू प्रोवाइड द डिले रिलीज कंपोनेंट टू रिपीट एक्शन ऑफ टैबलेट। Ideal property of entry coating material: resistance to gastric fluid, reduced susceptibility or the permeability to intestinal fluid, high compatibility with other film coating additive and tablet being coated, capacity to form continuous film with adequate mechanical property, easy of application without special equipment, ability to be printed or to allow film to be applied to deboss tablet, non-toxic with non-pharmacological activity, stable along in coating solution. Now the polymer used for the enteric release film coating. First आपके पास है cellulose acetate phthalate. Cellulose acetate phthalate is also known as Cellofect, is the oldest and the most widely used synthetic entry coating polymer. It was patented as an enteric agent in 1940 by the Eastman Kodak Company. Cellulose acetate phthalate synthesized by reacting a particle acetate ester of a cellulose with phthalic anhydride in the presence of tartrate organic base such as pyridine और strong acid such as sulfuric acid. Second one आपके पास है cellulose acetate trimillitate. Chemically this polymer bears a strong resemblance to the cellulose acetate phthalate. It is formed by
some synthetic process as the cellulose acetate phthalate with trimellitic anhydride as substituent group in place of phthalic anhydride. Typically value of the trimethyl and acetyl substitution are 29% and 22.4% respectively. नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज phthaleate is a white or a slightly off white free flowing flakes or granules powder with a slightly acidic color and a barely detectable taste. It is derivative of hydroxypropyl methyl cellulose that is produced by transesterification of hydroxypropyl methyl cellulose with phthalic acid. नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एस्टेट succinate is also known as a hypromylase acetate. Succinate is a white to a off-white powder or a granules derived from the hydroxypropyl methyl cellulose by esterification of free hydroxyl group on the polymer backbone with acetic anhydride and succinic anhydride. It is commercially available in a 3 grade of L, M and H, which correspond to the pH dependent release profile at the low of pH 5, 5.5 and 6.5. Polyvinyl acetate phthalate is a free flowing white or to off-white powder with a slight odor of acetic acid. It is reaction product of phthalic anhydride, sodium acetate and the partially hydrolyzed polyvinyl alcohol. Methaacrylic acid copolymers. This group of the polymer are widely used for entry coating application as they contain a free carboxylic acid group that are ionized whenever the pH of the environment exceeds 5.5. They are produced by an emulsion polymerization process and where the first introduced by the entry coating application by the Lehman and the Derrier in the middle of 1960. ये आपके पॉलीमर्स थे, ठीक है, फॉर एंट्री कोटिंग जो आपके पास प्रोसेस है टैबलेट के लिए.